Hello friends, Art Keeper is back again with Kala Bhavana after 100 years. This exhibition was held in 2022 at Lalit Kala Akademi और ये एक गाला शो था, मेगा शो था, आप सोच भी नहीं सकते. And there was Mrs. Ira Chaudhary, wife of Shanko Chaudhary. मतलब लिविंग लेजेंड्स हैं ये, एलुमनाइज हैं. Oldest, she was there, and Mr. M. Dharmani was there. This was the gathering, huge gathering. It was like Kumbh Mela of art. It was literally Kumbh Mela of art. Yes, so many alumni. आनंदमय बैनर्जी को आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे राइट नाउ. बहुत सारे सुशांतो गुहो, बहुत सारे लोग थे यहाँ पे. और ये है गैदरिंग, मैंने टॉप व्यू लिया है. आई हैव यूज्ड दिस इज द गैदरिंग, यू कैन सी. वाओ, so many students were there, faculties were there, and invited guests were there. I have used Ravindra Sangeet instead of any background music, so stay with Art Keeper. I have not used anything from the internet, not downloaded from the internet. All these songs are originally sung by people who are amateur singers, some are professional singers. Art has a larger role to play in life and in society than just the studio practice. At the same time, Bhavana has retained its as a open architecture, always accepting the ideas, knowledge from the world, with open mind to keep it evolving and remain fresh and modern. Perhaps in a sense, carrying true spirit of Rabindranath Tagore vision integrated education. Before end, I must thank some of the teachers. It is the teachers, it is a team effort where all the teachers and our students, they were there to make this happen. And I will start with also with our Vice Chancellor, Professor Vidut Chakraborty, with all our request, wrote letter to the Chairman of the Academy to give this whole academy in such a short time. And I must thank the Chairman and the Secretary of Kala who gracefully agreed to our request and gave the book to us. I must thank Anshuman Das Gupta, from Govinda, Sanjay Malik for curating this show. Also, we must take some names like Panchan Ghosh, like Rishi Parwa, like Shishir Kahana, and many more. And also say that at present my tenure as principal is over. So new principal has taken over the president of the class, and he is also cooperated with this project. So I thanks everybody, and also I can't take names of so many students. I might have name of some very important members as well. But it was genuinely team effort to make this happen. Thank you. Thank you. The only claim I think I have to be here today is that probably I am the oldest living student of Shantiniketan. ठीक है जी? I did my diploma in Shantiniketan in 1949, and 4 years of Kala Bhavan I learned that I was never going to be a painter. But however, I did become a potter, and I used all the sensibilities that I have got in my training, full use in that. But apart from the training part, Kala Bhavan and Shantiniketan
your lives in a way that doesn't ever leave you. আমরা দেখাই জানি মরে সেটাই কাটু যায় না দূরে so that is something that you carry with you all your life and that's about it. Thank you. Sadhu, 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 sadhu. मैं एक धर्मानी हूँ और आप जानते हैं धर्मानी जो है ना वो सिंधी होते हैं और इसी तरह के जिनके साथ आनी लगता है वो सिंधी भी है लेकिन सिंध से मैं शांतिनिकेतन गया ये एक बड़ी अजब की बात है क्योंकि अधिकतर लोग सिंधी बाहर निकलते ही नहीं थे सिंध से वो वहाँ ही और हमारे लिए सारी इंडिया जो है एक किस्म से फॉरेन लैंड ही समझा क्योंकि वो अपने काम में रहते थे और वहाँ ही जॉब मिल जाती थी वहाँ ही अपना धंधा करते थे बिजनेस करते थे लेकिन मेरा एक ऐसा मौका आया दुखदाई मौका आया कि पार्टीशन हो गया 47 में तब तक मैं 17 साल का था कराची में था और वहाँ स्कूल में शरणागति में शाम को जाकर के शाम को 3-4 घंटे आर्ट का क्लासेस अटेंड करता था क्योंकि मेरा आर्ट अच्छा था स्कूल में उससे पहले मैं इंटरग्रेड ड्राइंग एग्जीबिशन वो पास वहाँ जो शरणागति एक संस्था थी जो इसके एजुकेशन आर्ट डांस म्यूज़िक को बढ़ावा देने के लिए उनको टैगोर से ही क्योंकि टैगोर भी सिंध आया था राइटर्स ने सिंध के राइटर्स के टैगोर को इनवाइट किया था हैदराबाद में या कराची में तो उन्होंने वहाँ के सिंधी आर्टिस्ट से मिलकर के वो बड़े हुए थे और उसके आने से सिंधी उनके जो लिटरेचर था बंगाल का वो सिंध में ट्रांसलेट होने लगा और मैंने उसी टाइम पे वो बहुत सारी टैगोर की कहानियाँ और दूसरे राइटर्स की भी पढ़ी थी शरणागति में जो आर्ट सिखाते थे वो बंगाल के टीचर थे क्योंकि 7th सेंचुरी में मुसलमानों ने जीत लिया था जबकि दिल्ली मुसलमानों ने 11 साल तो 7वीं सदी से उन्होंने सारी हिंदू कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया मंदिर आर्ट म्यूजिक और डांस सिंध की एक से फोक के अलावा और इसी तरह का ये काम आर्ट में भी नहीं वैसे ही रहा पेंटिंग को स्कल्पचर को ये एक किस्म से थोड़ा कुछ कमर्शियल आर्ट होती थी तो जो क्रिएटिव आर्ट था वो और वहाँ आर्ट स्कूल नहीं था which has celebrated 100 years when India is celebrating 75 years, is here to tell us and join us together in art and culture. I'm so happy that you are here in Delhi and we welcome you for it. I would only say that Nandalal Bose was also the main painter of Indian Constitution in the original form, and I think he gave life to many of our historical characters by bringing tradition with modernity, strength with region, and change. I'm so happy to be here. Today only I want to say, finally I don't want to talk much because the paintings are more important than what I have to say. I just want to say that between the idea and the reality, between the motion and the action, falls the shadow. And it is art that fills the shadow. Between the conception and the creation, between the emotion and the response, falls the shadow. And again, it is art that
comes here. And I think when we're talking about uniquely and holistic education, I think institutions like BHAVANA and others are more important than maybe universities, even like AAU. I thank you today for inviting me here. I'm so happy to be among such great artists, and I hope I also enjoy and learn a lot about the wonderful paintings done by your teachers. Once again, I'm so happy that Jawaharlal University could contribute in a very strong way for this exhibition. Thank you once again. I'll be talking to one of the faculties who is taking care of the art history department, Anshuman Dasgupta. So let's talk to him and understand the concept behind this Kala Bhavana after 100 years. Please, sir. Well, we titled it Conviviality, a season of conviviality, Kala Bhavana after 100 years, Okay. which sort of, sprang from the idea of congregation and conviviality, a kind of sense of friendship. Okay. So, which is something like, that persisted over 100 years, sporadically springing up, going down, etc., which created a bond between different artists and art practices, Right. and creates a community of sorts. Okay. So from that came the idea. So from those ongoings that you observe,
Right. comes the idea, springs the idea. So there's no mystery behind it. It's a normal thing. It's an everyday life that mattered here Right. in Kalabhavan. Before the lockdown. In fact, in memory of that, I sort of gave it a name. Okay. Yeah, and sort of after lockdown, I visualized that it should, in a sense, come back, or it should come back in a different way, that the campus life, Right. because that is the source of its, honorable distinction between this college and the rest Another. of the. Absolutely. Yeah, because That spirit. Yeah, and also we spend most of the whole day over there. Right. That was the case before the COVID, but after that it sort of shrunk. The spaces shrunk. The Absolutely. practices kind of shrunk. Right. So, in that sense, we were lucky to have got an opportunity to get together to organize this. This was an opportunity to kind of again test the ground for kind of real conviviality, a real congregation, once again renewal of those energies that we see as is vital for this particular college, Right. and that is the That is the basic idea. concept. I was just talking to a few artists also, senior artists, we were thinking about, why not give people shown the works of other artists, like the legends like Ram Kinkar, Nandulal Bosch, and many others. If you walk through this area, we had to economize first of all because Okay. of the dearth of space. Right. We had about 138 plus 7, something like 142 Participants are artists. here right now. Yeah, and something like 180, round about 180 walks. It's a grand show. So to manage those many materials in one space Right. is a big Challenge. struggle. And for over 1.5 months, Right. we tried to make do of whatever we have. So within that, adjusting the space, we did a recce also to come over and check the space, real space. Right. That's how we hit upon this idea. I sort of hit upon this idea of having that mural installed over there as a replica. That's over there on the wall. That's about campus life. Right. So it So shows it the shows the more or less actual mural from Shantiniketan. actual mural from Shantiniketan. It's not a mural; it's a replica of it. Replica of that. So we created the study area, so that's to give an introduction to the entire ongoings of the past and the present. Of the past and the present. Yeah. So trying to create a bridge. Trying to create a bridge between the past and the present in certain sense to situate it today. Right. So the present is also very important, however skimpy, however organized or unorganized it might look, unkempt it might look. It's not unkempt, but No, absolutely there's a lot of difference between the past and the present. True. So that difference should come out somewhere. And And- that can be only done by doing works together in a new circumstance. And that happened during the tent making and also the mural making upstairs, which you can see as a temporary attempt at recongregating Okay. and working together. That was an exercise in working together, and that was created by that temporary mural. Okay. So those signs are the visible signs of, signs that can point at the conviviality, the term conviviality. Okay. So do you have any plans to, take this entire exhibition to other parts of India? We primarily didn't plan like that because what happens, everything is related to the budget, the finance, etc. Right. And accordingly, you have to kind of think. So here it so happened that we had constraints, so we couldn't actually take it up, this kind of mammoth idea. Right. But we thought definitely we must kind of try and do something later if opportunity comes our way. But right now, It's Delhi. We are lucky. it's Delhi. Yeah, and then probably if somebody offers us, we'll be happy to show it somewhere else. You have done the same exhibition there in Shantiniketan also? Have you done this kind No, of? we don't have that kind of space. Okay. Okay. Thank you so much for your time, sir. Thank you very much, friend. আমাদের শান্তিনিকেতন সে যে সবতে আপন আমাদের সবতে আপন আমাদের শান্তিনিকেতন আমাদের শান্তিনিকেতন তার আকাশ ভরা
কোলে মোদের দোলে হৃদয় দোলে ও তার আকাশ ভরা কোলে মোদের দোলে হৃদয় দোলে মোরা বারে বারে দেখি তারে নিত্য এ নূতন আমাদের শান্তিনিকেতন আমাদের শান্তিনিকেতন মোদের তরু মূলের মেলা মোদের খোলা মাঠের খেলা মোদের নীল গগনের সোহার মাথা সকাল সন্ধ্যা বেলা মোদের তরু মূলের মেলা মোদের খোলা মাঠের খেলা মোদের নীল গগনের সোহাগ মাথা সকাল সন্ধ্যা বেলা শালের ছায়া বিতি বাজায় বনের কলগীতি সদাই শালের ছায়া বিতি বাজায় বনের কলগীতি সদাই পাতার নাচে মেতে আছে আমলকি কানন আমাদের শান্তিনিকেতন আমাদের শান্তিনিকেতন আমরা যেখায় মরি ঘুরে সে যে যায় না কবু দূরে মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাধা চিতার সুরে আমরা যেখায় মরি ঘুরে সে যে যায় না কবু দূরে মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাধা চিতার সুরে প্রাণের সঙ্গে প্রাণে সে যে মিলিয়েছে এক তানে মোদের প্রাণের সঙ্গে প্রাণে সে যে মিলিয়েছে এক তানে মোদের ভাইয়ের সঙ্গে ভাইকে সে যে করেছে এক মন আমাদের শান্তিনিকেতন আমাদের শান্তিনিকেতন Well, I'm on a short tour of Shantiniketan, and this beautiful video was provided by one of the students, Shoham Chakraborty. Kala Bhavana was founded in 1919 by Rabindranath Tagore. We call him Kobi Guru Rabindranath Tagore. I'll also be showing you Nandan Mela. And Nandan Mela happens every December, 1st and 2nd of every December. And it has got a very interesting history. Nandan Mela began in the year 1973 as a fundraiser for a student of Kala Bhavana who had met with an accident. And after that, every year this Nandan Mela happens to, to generate some money for students' welfare, for students who need some medical help for them. This entire space has inspired so many artists, so many creatives. ये जन्मदाता है आर्टिस्टों का, कलाकारों का. I believe, and I think I have heard this many times, that we are born twice. Once our parents give birth to us, and the other time is our educational institutions and our teachers, our gurus who guide us. ये जगह है, ये जगह, इस जगह में ही एक जादू है, जो जादू इतने सारे आर्टिस्टों को पैदा किया है. मैं कहता हूँ पैदा किया है. यस, गिवन बर्थ टू सो मेनी आर्टिस्ट. यहाँ पे पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग, स्कल्पचर, डिज़ाइन डिपार्टमेंट भी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शो यू द स्पेस which has inspired this entire exhibition, this artworks, the body of artworks, which you are going to see at Lalit Kala Akademi later on. इसके बाद वीडियो में बाद में आप देख पाएंगे. प्लीज़ डोंट स्किप. आप स्किप करेंगे वहाँ पहुँच जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा. पहले आप एक शॉर्ट टूर को कीजिए शांतिनिकेतन का आर्ट कीपर के साथ, और देखिए कि ये जगह क्या है. I think we don't have this kind of space or this kind of openness in any other art institutions in any other place in India. मुझे तो नहीं लगता. Myself, Shomen Bhomik, who runs Art Keeper, I used to teach, and I still teach in various art colleges in Delhi and NCR, but I have never seen this kind of space. And this building, look at this building. This particular mural was painted by K.G. Subramanian, all hand painted, black and white. इसमें दुर्गा भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें माइथोलॉजी भी है.
and it's so striking in black and white, very striking. And I'm really glad, I'm really thankful to सोहम चक्रवर्ती, जिन्होंने बहुत डिटेल में और पेशेंटली इसको वीडियोग्राफ किया है. लुक एट दिस बिल्डिंग, इट्स सो डोमिनेटिंग एंड ही हैज़ नॉट यूज एनी अदर कलर. सी देयर इज नो अदर कलर, इट्स ब्लैक एंड वाइट. कोई और अगर होता तो सोचता था कि बहुत सारे कलर्स यूज़ करते हैं, कलरफुल बनाते हैं. नहीं, ब्लैक एंड वाइट इज़ वेरी स्ट्राइकिंग. इट हैज़ इज ओन प्रेजेंस. के.जी. सुब्रमण्यम को लोग प्यार से मनीदा बुलाते थे. मोनीदा, दा मतलब दादा. एल्डर ब्रदर्स को बंगला में हम दादा या दा बुलाते हैं. सो के.जी. सुब्रमण्यम यूज्ड टू बी नोन एज मोनीदा एंड स्टूडेंट्स यूज्ड टू कॉल हिम मोनीदा. यहाँ पे टीचर्स को दादा बुलाते हैं. यस यस. एंड ही वॉज अ टीचर देयर एट शांतिनिकेतन. ही वॉज अ फैकल्टी. He contributed a lot for this institution, for the students, and also for Indian art. He was a well-known figure in contemporary Indian art. He is no more with us, but still we have his art with us, and his art is so formidable. Look at this mural. मुझे इस म्यूरल को बार बार देखने का मन करता है, बार बार. I don't know why. It's so mysterious. I love black and white. I love to draw. So maybe just because of that. मुझे figurative drawings पसंद है, मुझे abstract इतना पसंद नहीं है. So maybe just because of that. So you have to go into the depth of this particular institution. And again, one more mural on the wall. I will also show you the classrooms, the studios basically. The painting studio, the sculpture studio, and the print making studio I have. यहाँ पे टेक्सटाइल के भी काम होते हैं. उसके मेरे पास कोई वीडियोस नहीं है यहाँ पे, unfortunately. But yes, you'll also love the short glimpses of Nandan Mela. The students are very active here. They participate in lot many things. बहुत versatile हैं यहाँ के students. So they develop in a multifaceted way. Now look at this. This is the printmaking studio. And here's the faculty. Ajit Shil is conducting the lithography class. And you can see students up there. ऐसे बहुत सारे आप वीडियोस देख पाएंगे जहाँ पे स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है. So I believe this will inspire you. This will motivate you in a different way. And this is the printmaking studio, and students are doing lithography. They are preparing the stone, they're drawing on it. इस प्रोसेस में काम कर रहे हैं. Now you look at this. लिथोग्राफी का काम चल रहा है. Look at this. Art needs lot of dedication. ये meditation है. It's a kind of a meditation. You have to meditate. It's not a joke. Wood carving. Then you have lino cut. There's a time when you used to do lino cut, and wood carving is also there. Now you can see the printmaking department student. And this is the printmaking studio. Let's enter the space and see the space where students create magic. And later on you will see the exhibition at Lalit Kala Akademi. और यहाँ पे वही आर्ट वर्क्स हैं जो उन्होंने यहाँ पे प्रोड्यूस किया है, तैयार किया है, जन्म दिया है, वो वहाँ पे है. दिस लिथोग्राफी, द स्टोन लिथो प्रिंट के लिए तैयार कर रहे हैं स्टूडेंट्स. You need a space where you can engage yourself and where you can feel free and your ideas can grow and take a shape. This is Shantiniketan, the space. And I'm also thankful to artist Shojol Patro, who went there at Shantiniketan for some work, and he did
certain videos, and he provided them to me. I'm thankful to him, and I'm also thankful to few other artists who have provided me with the videos of different studios and different locations. This is the space of Lalit Kala. Now the exhibition begins. Let's start the journey. And this exhibition, Kala Bhavana after 100 years, was curated by Anshuman Dashgupta along with Sanjay Kumar Mollik and Shobik Nondi Mojumdar. The exhibition was divided into two parts, like the ground floor was dedicated to all the faculties and the upper floors were dedicated to the students. तो आप घुसते ही जहाँ पे when you enter Lalit Kala and you just climb the stairs, and the exhibits were mainly for the faculties, and on the first floor it was for the students. Both were amazing. So अभी जो आप देख पा रहे हैं, this is dedicated to the different faculties of Kala Bhavana. इसमें प्रिंट मेकिंग के भी फैकल्टीज़ हैं, पेंटिंग है, स्कल्पचर्स हैं, न्यू मीडिया भी है, एंड I tried to do justice with documenting this epic exhibition. I say epic basically. Once in a lifetime, 100 years of Kala Bhavana. It's an epic thing. और इस एग्जीबिशन को डॉक्यूमेंट करने के लिए मुझे कम से कम टाइम जो लगा, इट्स more than 6 months, and I am grateful to all the students and the faculties who extended their friendly collaboration and support and solidarity to make this video documentation a success. इन सब का जो नाम है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं. द क्रेडिट लाइन इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो ऑल द फैकल्टीज़ एंड ऑल द स्टूडेंट्स who supported in this epic documentation are mentioned in the description section. So please do check in over there. You'll get all the details about this entire project. आप उनके नाम, उनके डेजिग्नेशन भी देख पाएंगे. This is the space of Lalit Kala Academy, and these are the works of the different faculties. All faculty members of Kala Bhavana. If there is any mistake, please forgive me. अगर कुछ रह गया हो, अगर कुछ मैंने डॉक्यूमेंट नहीं किया है, so please forgive me. But I think I have documented the entire exhibition. The entire exhibition is over here. So I have not missed anything. There was a huge gathering of students there. और मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स से बातें किए हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स के इंटरव्यू भी लिया है. आप वो भी देख पाएंगे, स्टूडेंट्स इंटरव्यूज़ एंड व्हाट दे हैव said about their own creation. So now enjoy one more Rabindra Sangeet by Chandrima Bhattacharya. লোকে যখন আসবে তখন কোথাও তার দিবির ঠাঁই দেখরিছে আপন পানে পদ্মটি নাই লক্ষ্মী যখন আসবে ফিরছে কেঁদে প্রভাত বাতাস
হতাশ ফিরছে কেঁদে প্রভাত বাতাস আলোক চেতার ম্লান হতাশ মুখে চেয়ে আকাশ তোরে সুধায় আজি নীরবতায় পদ্মটি নাই পদ্মটি নাই লক্ষ্মী যখন আসবে কত গোপন আশা নিয়ে কোন সে গহন রাত্রি শেষে অগাধ জলের তলা হতে অমল কুড়ি উঠল ভেসে কত গোপন আশা নিয়ে কোন সে গহন রাত্রি শেষে অগাধ জলের তলা হতে অমল কুড়ি উঠল ভেসে হলো না তার I'll be talking to Uttam Vashak, who is one of the faculties from Shantiniketan, BHAVANA, and let's get to know about this exhibition, which is very historical, 100 years of BHAVANA. Sir, please tell us about this exhibition and about It's your a work. great opportunity for all of us. BHAVANA has completed the 100 years on this occasion. We are having a gala show in the Right. heart of the country, that is Delhi city. And in this exhibition, we have 40 faculty members, including 2 emeritus and 100 students works. Okay. These are final year students? Yeah, 2 batches of M.Phil students. Okay. One which has passed out this year and Okay. which have come in the final year of the M.Phil. Right. So we are having nearly more than 150 works. Wow. More than and combining the whole Lalit Akademi, the galleries. I think it has never been done. I think this is something it's a rare first time. and exhibiting the very selective works Right. of the BHAVANA. Absolutely, Santiniketan. absolutely. And I know that your Vice Chancellor is Prime Minister of India. We are Shantiniketan already having the privilege of getting the Chancellor of the University as a Prime Minister of India. Right. And we have got an appreciation letter from for this exhibition. We have got an appreciation letter from there also. Right. So this show is, you can say that show is a successful show. Absolutely. No doubt about all this. point of view. No doubt about this. There are more footfalls I have ever seen. Yeah. Uttam sir, please tell us about your work, which I can see just behind you. Basically, I am a printmaker. Right. And my beginning printmaking life started from BHAVANA, and then I was in Delhi for so many years. I was working in Gadi studio for 20 years. That Lalit Colors Gadi studio. Yeah, I right. practiced the printmaking, and then I joined BHAVANA. Right. And at the moment, I am a faculty member there and teaching printmaking there. So these are lithos, Yeah, I these believe? are the plate litho. Plate litho. Which earlier we used to do in the stone, now Stone. we can do on the plate Plates. also. So it's a plate lithography, colored plate lithography. Beautiful. Thank you so much for your time and talking to Art Keeper, sir. Thank you so much. Thank you. অরূপ বীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে বাজে
লুকিয়ে বাজে 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 অরূপ বীণা সে বীণা যে উঠিল বাজে হৃদয় মাঝে বাজে বাজে অরূপ বীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে ভুবন আমার ভরিল সুরে ভেদ ঘুচে যায় নিকট দূরে ভুবন আমার ভরিল সুরে ভেদ ঘুচে যায় নিকট দূরে সেই রাগিনী লেগেছে আমার সকল কাজে বাজে বাজে অরূপ বীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে 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 অরূপ বীণা হাতে পাওয়ার চোখে যাওয়ার সকল বাঁধন গেল কেটে আজ সফল হলো সকল কাঁদন হাতে পাওয়ার চোখে যাওয়ার সকল বাঁধন গেল কেটে আজ সফল হলো সকল কাঁদন সুরের রসে হারিয়ে যাওয়া সেই তো দেখা সেই তো পাওয়া সুরের রসে হারিয়ে যাওয়া সেই তো দেখা সেই তো পাওয়া বিরহ মিলন মিলে গেল আজ সমান সাজে বাজে বাজে অরূপ বীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে 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 অরূপ বীণা সে বীণা যে উঠিল বাজে হৃদয় মাঝে বাজে বাজে অরূপ বীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে 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 অরূপ বীণা This beautiful Ravindra Sangeet was sung by Shishi Shahana, one of the faculties of BHAVANA. I will use original Ravindra Sangeet songs sung by various people so that you get to feel the essence of this space. This exhibition invites a lot of critical analysis of art and art practice in India at present. इन आर्टवर्क्स को आप दोबारा यहाँ पे कभी नहीं देख पाएंगे, फिजिकल वर्ल्ड में तो नहीं. इट विल बी देयर ओनली ऑन आर्ट कीपर. सो कीप सपोर्टिंग आर्ट कीपर. प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर with the friends, with the students, with the loved ones. If you have missed anything, Art Keeper is always there to show you the exhibitions of the artists. This particular exhibition was an epic exhibition, grand exhibition. इस स्केल में शायद दोबारा इस तरह के एग्जीबिशन मुझे दिल्ली में देखने को नहीं मिलेगा. And I feel very lucky to
video document this entire exhibition. Whenever you get a time, try to visit exhibitions in the physical form with your family. Just keep your weekends for art and cultural activities. If you're in Delhi, even if you are in Kolkata, any place, any metro, any place, हिंदुस्तान में कहीं भी रहे आप इस देश में, आपको जब भी वक्त मिले सैटरडे या संडे को आप अपने फैमिली को लेके एग्जीबिशंस देखिए, पेंटिंग एग्जीबिशंस देखिए, कल्चरल शोज देखिए, डांस शोज, म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस, वॉट एवर. It's very important. It's very important to support artists and singers and dancers, and also all these things are important for our own personal growth. बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है. सिर्फ स्कूल एजुकेशन ही ज़रूरी नहीं होता, इसके बाहर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. सो नाउ लेट्स हियर वन मोर रविंद्र संगीत. आकाश भरा सूर्य तारा विश्व भरा प्राण ताहारी মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান বিষয়ে তাই জাগে আমার গান আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্ব ভরা প্রাণ তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান বিষয়ে তাই জাগে আমার গান আকাশ ভরা. অসীম কালে যে হিল্লোলে জোয়ার ভাটায় ভুবন দোলে, অসীম কালে যে হিল্লোলে জোয়ার ভাটায় ভুবন দোলে, নারীতে মোর রক্ত ধারায় লেগেছে তার টান বিষয় তাই জাগে আমার গান আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্ব ভরা প্রাণ তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান বিষয়ে তাই জাগে আমার গান আকাশ ভরা. ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে, ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে, ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে, ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে, ছড়িয়ে আছে আনন্দেরই গান বিষয়ে তাই জাগে আমার গান. কান পেতেছি চোখ মেলেছি ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি,
প্রাণ পেতেছি, চোখ মেলেছি ধরার বুকে, প্রাণ ঢেলেছি জানার মাঝে অজানারে, করেছি সন্ধান বিস্ময়ে তাই জাগে, জাগে আমার গান আকাশ ভরা, সূর্য তারা বিশ্ব ভরা প্রাণ, তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মন স্থান বিস্ময়ে তাই জাগে, জাগে আমার গান আকাশ ভরা। Look at this art book or graphic novel, whatever you want to call it, or artist book. I was tempted to show you this, all the pages. It's me, it's art keeper flipping through the pages basically. मैं खुद इनको आपको दिखा रहा हूँ. बहुत ही बेहतरीन ड्राइंग्स हैं ये, बहुत ही बेहतरीन, एंड चिल्ड्रन वर लविंग इट. बहुत अच्छा लगा मुझे कि यंगस्टर्स यहाँ घूम के देख रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं. और इस तरह के ड्राइंग्स, इस तरह की चीज़ें देखना कभी कभी मुझे लगता है कि रेयर है. आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम आई एम लुकिंग एट लॉट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट इन दिल्ली एंड इवन इन कोलकाता आई हैव सीन लॉट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट. दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस तरह के ड्राइंग्स, लाइन वर्क्स, फिगरेटिव वर्क्स देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस है. सो एंजॉय दिस. I flipped through the pages of this graphic novel or a graphic book or artist book maybe, and it was so beautiful. And look at this, they were young enthusiasts, they were studying all the displayed artworks. और यहाँ बच्चों को भी देख पाएंगे, देखिए इन्हें, so beautiful. And it gives me a lot of pleasure, a lot of happiness when I see kids, youngsters, teenagers getting involved with art and culture, especially with art, when they try to involve themselves, when they try to get into this creative mood. ये बहुत ज़रूरी है इनके लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए, इनके पूरे लाइफ के लिए. And this was a beautiful video installation inside a kind of a globe being created over there inside the exhibition space at Lalit Akademi. And please do subscribe कीजिएगा, please do subscribe to Art Keeper and enjoy this video. And this video is basically showing the entire Kala Bhavana and the spirit of Shantiniketan. All these videos. This is a space when you actually travel by train towards बोलपुर. जब आप जाते हैं शांतिनिकेतन की तरफ, ये वो है दृश्य, ये वो व्यू है, ये वो लैंडस्केप है. It's so beautiful. It all inspires you to create and create. Yeah. The crowning achievement of the Middle Period Absolutely. came with a fresco in Hindi Bhavan. The saints and mystics of medieval India. All these videos are showing the life in Shantiniketan, in Kala Bhavana, work by various faculties, the legends, विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस. ये पूरी ज़िंदगी जो है, उनकी पूरी जो जर्नी है शांतिनिकेतन की, वो भी है यहाँ पे. तो ये एक वीडियो इंस्टॉलेशन था वहाँ पे, एंड इट वाज रियली गुड. The only example of a truly epic conception in 20th century Indian art. The fresco occupies 3 walls of the central hall.
composition shows a remarkable cohesiveness. যেখানে গেরবেশিং জিনিসটা আমরা থাকে প্রি রেনেসা বলে মনে হয়েছে তারপর বাইজেন্টাইন জৈন গড পাটা এই তোমার হিস্টোরিক্যাল কাছে ওটা অনেক তফাৎ আমার কাছে তোমার কাছে আর্টিস্টের কাছে কি তফাৎ মানে জৈনের পাশে একটা তোমার ফোক ফিগার দিলে কার বাবার সাথে দিতে হবে না ভর্তি 1925 তখনকার সময়ে আমাদের এই কঠিন যেমন ধীরে ধীরে করলাম বিরোধী বিহারী Now you can see Ram Kinkar Baj, the legendary sculptor, one of the faculties of Shantiniketan और कला भवना. राम किंकर बैच के भी यहाँ पे वीडियोज़ हैं बहुत सारे. This video installation is so inspiring. मैंने कोशिश किया है जितना भी हो सके उस मोमेंट को कैप्चर करूं जहाँ पे उसे इंस्टॉल किया गया था, जिस तरह से किया गया था. राम किंकर बैच को आप देख पा रहे हैं ऑन योर स्क्रीन. And he did the Yaksha and Yakshani, two sculptures outside the RBI building in New Delhi. जो RBI का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो बिल्डिंग है उसके बाहर जो यक्ष यक्षनी बने हुए हैं वो इन्हीं के बने हुए हैं और बहुत पहले 80s में बनाए गए थे वो राम किंकर बैच के दौरान. And it shows Shantiniketan, it shows Kala Bhavana, it shows the surrounding area, it shows the faculties. My goodness, so beautiful. आप देख पा रहे हैं राम किंकर बैच उस उम्र में भी स्केचिंग कर रहे हैं बाहर खड़े होकर. And today youngsters run away from sketching. They don't want to sketch. They don't want to draw. They are totally dependent on the digital world. And this is Shantiniketan again showing through this video installation. And I'm spending a little more time with this video installation because I want you all to see this. आप देखें इसे, enjoy करें. I shall look forward to a new dawn, to a new chapter in history when the Holocaust will end and the air will be rendered clean with the spirit of service and sacrifice. In February 1940, Mahatma Gandhi called on Gurudev Tagore at Shantiniketan. Gurudev described Gandhiji as one belonging to all humanity. The Mahatma said, Vishwabharati carries God's protection because it is the creation of an earnest soul. Shantiniketan will never cease to grow so long as Gurudev's spirit rules over it. এদিন আজি কোন ঘরে গো ফুলে দিল
Now again you are looking at the space of Lalit Akademi, the space where this exhibition was held. A lot of video installations were there, a lot of documentations were presented. So entire lineage, the entire journey was shown. यहाँ जिस तरह का क्राउड मैंने देखा था, इट वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड. बहुत सारे लोग गए, बहुत सारे लोगों ने देखा. नाउ सी दिस, these are various publications from Shantiniketan. It has been displayed. All the original publications are here. Newsletters, journals. And now we'll proceed to the upper floor where the student works are there. Look at this person enjoying his time with art. And so lovely. I want people to engage with art in whatever way they can. In whatever way they can. Look at this. These are all original publications from Shantiniketan displayed at Lalit Kala Academy during this epic show. 100 years of Kala BHAVANA. Every art institution has its own philosophy and ideology. Shantiniketan is totally different. It has its own ideology. Ideology क्या है? एक openness है, सबको space देने का एक जगह है. It gives love and acceptance to each and every idea. It's a beautiful ideology, and it's an abode of peace created by कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर. और शायद इसी वजह से लोग दिल खोल के fearlessly they create artworks which can make you feel unnerving sometimes and make you feel totally in a different zone. And this shows one of the murals from the campus जिसको यहाँ पे दिखाया गया है. And few more works from this exhibition.
लेट्स गो ऑन ए शॉर्ट ट्रिप ऑफ शांतिनिकेतन। चलते हैं, देखते हैं फिर से, और मैं आपको नंदन मेला भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले देखते हैं वो जगह जिसने इतने आर्टिस्टों को, इतने क्रिएटिव लोगों को हमारे सामने रखा है। दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ सो मेनी creative people. It's something mysterious, beautiful, obviously, and you have to explore it. अगर आपको टाइम कभी मिलता है, if you have time in your life, हम सब बिज़ी हैं, हम जानते हैं, लेकिन अभी कभी भी अगर आपको टाइम मिलता है तो प्लीज़ विज़िट शांतिनिकेतन। फिज़िकली जाइए, अपने फैमिली के साथ जाके कुछ वक्त बिताइए वहाँ पे। You have a lot of guest houses over there. Spend some time. This is the campus. This is Shantiniketan. Look at this. So beautiful, serene, green. This is the abode of peace and knowledge. इस तरह का कोई भी और हमारे पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। I don't know. I have never seen that. कोई और नहीं है। सो अगर आपको पता है तो हमें बताइएगा प्लीज़। আলো ভুবন ভরা, আলো নয়ন ধোয়ায় আমার, আলো হৃদয় ভরা, আলো আমার আলো, আলো ভুবন ভরা, আলো নয়ন ধোয়ায় আমার, আলো হৃদয় ভরা। নাচে আলো নাচে ও ভাই আমার প্রাণের কাছে, বাজে আলো বাজে ও ভাই হৃদয় বিনার মাঝে। নাচে আলো নাচে ও ভাই আমার প্রাণের কাছে, বাজে আলো বাজে ও ভাই হৃদয় বিনার মাঝে। জাগে আকাশ ছুটে বাতাস হাসে সকলে ধরা, আলো আমার আলো গো, আলো ভুবন ভরা, আলো নয়ন ধোয়ায় আমার, আলো হৃদয় ভরা। আলোর স্রোতে পাল তুলেছে হাজার প্রজাপতি, আলোর ঢেউয়ে উঠল নেচে মল্লিকা মালতী। আলোর স্রোতে পাল তুলেছে হাজার প্রজাপতি, আলোর ঢেউয়ে উঠল নেচে মল্লিকা মালতী। মেঘে মেঘে শোনায় ও ভাই যায় না মানিক গোনা, পাতায় পাতায় হাসি ও ভাই পুলক রাশি রাশি। মেঘে মেঘে শোনায় ও ভাই যায় না মানিক গোনা, পাতায় পাতায় হাসি ও ভাই পুলক রাশি রাশি। সুর নদীর কুল ডুবেছে সুধানি ঝরে ঝরা, আলো আমার আলো গো, আলো ভুবন ভরা, আলো নয়ন ধোয়ায় আমার, আলো হৃদয় ভরা, আলো আমার আলো গো, আলো ভুবন ভরা, আলো নয়ন ধোয়ায় আমার, আলো হৃদয় ভরা। ये रविंद्र संगीत जो आपने सुना है, ये वहीं के फैकल्टी ही शशि शाहाना जी ने गाया है। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, मैंने बहुत सपोर्ट किया है। नाउ यू लिसन टू वन मोर रविंद्र संगीत। और जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज़ द स्कल्पचर स्टूडियो एंड स्टूडेंट्स ऑफ कला भवना आर वर्किंग इन द स्टूडियो जो आप देख रहे हैं अभी। एंड आई एम थैंकफुल टू
one of the student, Shudipta Dash, who has given me all these videos. And Shudipta Dash, he is basically a student in the painting department, has made extra effort where he has interviewed the students also. कुछ डिपार्टमेंट के पेंटिंग के डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को उन्होंने इंटरव्यू भी लिया है जो आप सुन पाएंगे. सो बी विथ आर्ट कीपर, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर विथ फ्रेंड्स, विथ फैमिली. और मैं सभी स्टूडेंट्स को भी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी जान पाए आर्ट कीपर के बारे में. और मुझे सपोर्ट की तो ज़रूरत है, आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है. बिना सपोर्ट के आर्ट कीपर नहीं चलेगा. सो कीप वॉचिंग आर्ट कीपर एंड आई एम सेइंग थैंक्स टू Shudipta Dash again. He has made extra effort to make this project. This is quite an epic project for me. काफ़ी एफर्ट लगा इसे. एंड मुझे शांतिनिकेतन के स्टूडेंट्स, उनके फैकल्टीज़ के बहुत सपोर्ट मिला. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द फैकल्टीज़ एंड ऑल द स्टूडेंट्स. यहाँ पे स्टूडेंट्स के आप इंटरव्यू भी सुन पाएंगे लेटर ऑन व्हेन आई विल शो यू द एग्जीबिशन एट ललित कला. सो स्टे विथ दिस वीडियो प्लीज़. This is the Kala Bhavana campus. Now we'll climb the stairs. We'll go inside the painting studio. चलते हैं, देखते हैं पेंटिंग स्टूडियो के अंदर स्टूडेंट्स किस तरह से काम कर रहे हैं. उनसे बातें भी करेंगे. Shudipta Dash कुछ स्टूडेंट्स की इंटरव्यू लेंगे, वो भी आप सुनिए. एंड स्टे विथ आर्ट कीपर, स्टे विथ अस. Stay with us. Now look at this beautiful mural on the wall of the painting studio. Look at this mural. So beautiful. I'm telling you, it's a very unique educational space in entire India. And you'll just get to see how students react to this space. Now look at this. They're doing study work. I don't know, maybe some backup or like তোর কাজ একটু কিছু বল কাজটা শুরু. অত চাপ হচ্ছে এই কাজটা. এই কাজটা আমি আমার সারাউন্ডিংস পলিটিক্যালি কিছু অবজেক্টিভ দেওয়ার পলিটিক্যাল আমার সিচুয়েশন, আমার লাইফ রিলেটেড, মাই ডাইরেকশন, কিছু কিছু ঘটনা হয়. তো ঘটনাটাকে আমি কোথাও তুলে ধরি. পার্সোনাল একটা ডায়েরি এটা. পার্সোনাল তুই ডেইলি লাইফে যা যা এক্সপিরিয়েন্স করছিস
সেটা সম্পর্কে তোর একটা মানে ওটার একটা ভিজুয়াল এক্সপিরিয়েন্স এটা। ভিজুয়াল এক্সপিরিয়েন্স। হুম, ঠিক আছে। This is on your screen the painting studio, works being displayed for final assessment. You can look at the canvases, the drawings, paintings, and you will also hear one more interview of a student from the painting department. ক্যানভাসে কাজ করেছিল বা টিচার্সটা বলেছে ক্যানভাসে না করতে, এটা তো পেপারের হ্যান্ডমেডটা বেশি রীতি, এই রীতি, একটু কাজ সম্পর্কে একটু কিছু বল, হালকা হালকা। হ্যাঁ, তো এই কাজটা বেশিটা করেছি সানখাল কমিউনিটির যে ফর্মসগুলো ওইগুলো তো এটা একটা তালপাতা ফর্ম যে ওরা ইউজ করে ফর লাইক ইয়ারিং নেকলেস, তো ওইটা। আর এটা হলো পাম সিডস, পাম সিডস থেকেই যেহেতু আসছে তার গাছ, তারপর তালপাতা, তো এটাই একটা মেন, এটা একটা মেন সোর্স অফ অরিজিন। আর হাঁসটা হলো কাটা হাঁসের মাথা, ওখানে খুব ফ্রিকুয়েন্টলি হাঁস বলি হয়, তো ওইটাও আমি পাই ওখান থেকে এই সাবজেক্টটা। তো ইটস মোর অফ লাইক লাইফ অ্যান্ড ডেথ। এই এদিকে একটু এই পেন্টিংটা মেইনলি বোঝাচ্ছে গ্রোথ অফ এভরিথিং, গ্রোথ অফ লাইফ, গ্রোথ অফ ট্রেডিশন, গ্রোথ অফ স্কিল, ইন্টেলিজেন্স, আর বিভিন্ন আমি চুজ করেছি যেগুলো লোকাল ফর্মস, সেগুলো আর্থলি ফর্মস, লোকাল ফর্মস, বেসিক্যালি অর্গ্যানিক থিং। আচ্ছা আচ্ছা। আর এগুলো আমি এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করেছিলাম যে জিনিসগুলো এখানে করেছে ওগুলোকেই অ্যাজ এক্সারসাইজ, সিঙ্গেল এক্সারসাইজ। তো এগুলো এটা জাতলি নেই, আর ইয়েলো কালারটা হলো ওই এক মানে পিগমেন্ট কালার, ন্যাচারাল পিগমেন্ট। এইটা
এইটা একটা এই ব্রাউন পিগমেন্টটা হলো একটা লোকাল ফ্রুট পাওয়া যায় এখানে, বিষফল, খুব টক্সিক কিন্তু কালারটা খুব ভালো হয়। তো এটা ওইটা পিগমেন্ট। ওইটাও সেম বিষফলের। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আর সেগুনের। It's like more of a juxtaposition of the things of the community. Oi, Srijan! Srijan! বল কিছু ওটা না। আমার নাম সুশান্ত পাল, এটা আমার কাজ। এই কাজে আমি দেখা পেয়েছি যে উই আর হ্যাবিটেড অফ সিইং no particular object or any I wanted to break that object or the figure to give another dimension or another form. That was ঠিক আছে। And that's the first part of this epic journey, 100 years of कला भवना। और सेकेंड पार्ट में और भी बहुत कुछ हम देख पाएंगे, स्टूडेंट्स की इंटरव्यूज बहुत सारे होंगे। सो स्टे विद आर्ट कीपर एंड वॉच आउट फॉर द सेकेंड पार्ट। Thanks for watching this video. Stay with Art Keeper. Please subscribe and share with your friends and with your family. Thank you so much.